So 2 years back, I was offered a 2 lakh per month job by the wife of a very famous cricketer, but I declined the offer. And 7 months बाद, I was offered a job in Dubai with double the package, and this time I accepted it. And मैंने बहुत मजे किए वहाँ पे. But असली सवाल ये है कि वो कौन से 4 P's हैं that I followed to get these dream jobs, and how can you follow these same steps? AI को तुम एक ब्रह्मास्त्र की तरह leverage कर सकते हो to stand out from the crowd and bag your dream job and change your life forever. तो ध्यान से देखो and take some notes. तो step number 1 या P number 1 है presence. ओके, तो पहले प्रेजेंस की बात करते हैं. तो तुम्हें कोई भी 2 प्लेटफॉर्म उठाकर उनको अपना दोस्त बना लेना है. आई वुड सजेस्ट दैट यू टेक लिंक्डइन एंड एनी अदर प्लेटफॉर्म, एंड वंस यू हैव चोजन योर चॉइस ऑफ प्लेटफॉर्म्स, यू नीड टू बिल्ड आउट अ ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल. तो यार लिंक्डइन की बात करते हैं फॉर अ सेकंड. तुम्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा बनने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हें रिक्रूटर्स को इंप्रेस करना है, नॉट कियारा, राइट? But having a neat and clean DP is super important, and also put a banner image जो बताएगा कि तुम क्या बेस्ट करते हो. Since I run a marketing agency, this is the banner I have put for myself. After you have done all of this, then you can add a very interesting bio which talks about your specialities, your USPs, and your strong points. And if you scroll down in the featured section, also add your CV. तुम software use कर सकते हो like peak.link to make it stand out even more. तो मेरे पास एक बहुत क्रेजी हैक है तुम्हारे यहाँ पे. सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दोस बोरिंग सीवीज व्हिच इज जस्ट लाइक मतलब एक पन्ना ही है पेपर का, उसके बजाय क्रिएट अ प्रूफ ऑफ वर्क. देयर इज अ वेरी ग्रेट टूल कॉल्ड fueler.io which you can use to build cool looking proof of works, right? And I am telling you, this will take your game to the next level. Then just go ahead, fill out your about section, your experiences, your education, and also ask your friends to give you a recommendation. And this is all crucial and very important because जो तुम्हारे recruiters हैं, they're using platforms like LinkedIn Premium or Sales Navigator. What that means is that when they will be searching for profiles, your chances of coming up at the top are much higher because you've filled out all these different things, right? And जितना तुम ऊपर रहोगे उस list में, the more you have a competitive edge than your competitors, and your chances of getting the job are much higher. तो ये बात तो हो गया presence की. And step number 2 और P number 2 is popularity. हाँ देखो यार, मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे 30 फोटोग्राफर नहीं खड़े रहते ऑन दी एयरपोर्ट, या तुम्हारे 250 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है लाइक विराट कोहली, बट उसकी जरूरत भी नहीं है. Instead, what you need to do is you need to start posting content about 3 main things. So number 1 is your personal stories. Number 2 is client results and testimonials, and number 3 is news and information type of content to add value to your community, because वो लोग तुम्हें फिर आगे रेफर कर सकते हैं. And you need to post consistently. तो देखो, जैसे अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठना है तो तुम्हें उसके लिए रात को प्रिपरेशन करके जल्दी सोना पड़ेगा. So the same way, the formula for gaining popularity is that तुम बहुत सारा कंटेंट बना लो beforehand, and then उसे धीरे धीरे करके consistently post करो. So for example, you can spend 2 to 3 days to create content. You can use tools like tome.ai to create AI generated presentations and carousel based on the prompts you give it, and then you can use this AI generated thing and post it consistently. मैंने ये देखा typically that you will get 500 to 2000 3000 impressions based on how good your post is on LinkedIn. So you will actually be able to reach almost 15 to 30,000 people हर महीने, and उसमें से 10% लोग तुम्हारे recruiters होंगे. And जैसे मैंने पहले भी बात किया है, इसमें भी formula same है. The more content you post, again the stronger your profile and higher the chances of coming up at the top, especially when recruiters are searching for particular keyword. And here's a very interesting insight for you. Google, Microsoft, Apple, all of these companies value creativity and content at the highest of levels, and they also value out of the box thinking. And there are innumerable examples where people got a job just because they added a lot of value to their community and to their friends. ये तुम्हारा तरीका है of doing social work, because not only is it good but also because it shows that तुम्हारा बहुत ज़्यादा experience है and you have expertise in the field you are putting content on. मैं तुम्हें ये भी recommend करूँगा that you get into short form content with platforms like YouTube Shorts and Instagram. तुम्हें काफी ज्यादा चांसेस है कि तुम वायरल चले जाओ. एंड इधर भी फॉर्मूला सेम है, जस्ट बैच क्रिएट एंड देन पोस्ट कंसिस्टेंटली. सो P number 3 इज प्रोस्पेक्टिंग. देखो, आई नो दिस इज अ टर्म जो फ्रीलांसिंग और बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज होता है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर कनेक्टेड विद द राइट काइंड ऑफ पीपल. एंड तुम चैट जीपीटी बहुत ही अच्छी तरीके से इसके लिए यूज कर सकते हो. एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट मोर एक्चुअली इन दिस वीडियो, वेयर आई टेल यू कि तुम कैसे स्क्रिप्ट्स बना सकते हो और एक स्ट्रॉन्गर प्रोफाइल बना सकते हो यूजिंग चैट जीपीटी. ओके, सो द रीजन दैट आई वांटेड टू कनेक्ट with important people like CEOs हो गए, CMOs हो गए, CEOs हो गए, founders हो गए,
उसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है। तो मान लो तुम एक नए सिटी में जाते हो और वहां पे तुम्हें किसी बंदी के साथ डेट पे जाना है, तो तुम क्या करोगे? टिंडर या बम्बल पे जाने से पहले यू विल आस्क योर फ्रेंड, राइट, यार कोई बंदी है तो उसे इंट्रोड्यूस करवा दे, बिकॉज इन दैट वे देयर इज अ फॉर्म ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन बोथ द पार्टीज, इन दिस केस यू एंड द बंदी, राइट? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यू शुड बी कनेक्टेड विद द राइट काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज जो हमने बात की, रिक्रूटर्स को लगे कि यार अच्छा तुम इनसे कनेक्टेड हो, दैट मीन्स वो तुम्हें जानते होंगे शायद, लाइक अनदर वेरी ऑब्वियस रीजंस, राइट? एंड वंस यू प्रोस्पेक्ट एंड कनेक्ट विद दीज CXO लेवल पीपल और फाउंडर्स, तुम जेन्युइनली जाके उनके कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करो, go ahead, send them a message, tell them, give them a short introduction about you, about your story, the kind of value you can provide to their company. Say अगर मान लो ये founder तुम्हारे dream company के owner हैं, then go and tell them that why should they even hire you, right? What will you do different from the competitors and the other contenders? And तो उनकी team या उनके HR department से किसी साथ connect करते हो, you can always ask them कि hey, is there any vacancy for this job role? And obviously don't pester them, go ahead and actually try and add genuine value through your content and stories. And I'm telling you, this is the shortcut to success. और अगर तुम थोड़े और desperate हो to find your dream job, what you can do is you can invest in LinkedIn Premium. 1200 पर महीने का I think उसका charge है, but it comes with a lot of additional features like the email, where you can send like an email kind of a thing to these people who you want to connect with within LinkedIn. The other benefit is that you can connect and outreach to many more people per week than on the free plan. इससे तुम्हारे chances of connecting with the right kind of people increases. And now we can talk about the P number 4, which is perseverance. देखो, nothing incredible ever came quick. So the main difference between billionaires और billionaires सोचते हैं in decades and millionaires सोचते हैं महीनों में और सालों में, right? That is a major difference between billionaires and millionaires. So bagging your dream job, it might take you 1 year, but it is much better than working a shit job for 1 month, because तुम्हारी salary 10 times होगी and the kind of respect you get will also be 10 times. So start today. You can subscribe to the channel. You can also follow me on Instagram. तुम्हें कोई भी सवाल है on how to get your dream job, you can always text me there. And if you're interested in freelancing or building an online business, I've made a video right here which talks about how can you build a 50 lakhs per year business in the next 2 to 3 months. So go ahead and watch this and see you in the next one.